Hello, everyone. Welcome to another workshop by Tios. Today we have with us Miss Rima Rajput. Hello, Rima. Hello, Zara. How are you? I'm good. How are you? Great. And thank you for the opportunity. Thank you. Welcome. You, excuse me. Welcome to our workshop. Thank We are so pleased to have you with us today. And thank you. let It's an me tell honor. our viewers very briefly about our speaker. I personally find her a very interesting person. She has done her bachelor's in biotechnology, and Absolutely. she her love for plants and passion started during the pandemic, like most of Absolutely. us. And she's currently, as she says, on a journey to discover what she wants to do in life, which I find very interesting. And she's looking for some work that can get her excited and is also Hmm. interesting to work. So there are a lot of interesting words that I'm using today, and I will be using for the rest of the workshop. And that's the part I really love about her. She does a lot of interesting stuff on her Instagram page as well. You can go and check out her page. It's called Being Earthwise. The link is in the description box below, and you can follow her Instagram, connect with her. And she shares a lot about being a minimalist and about sustainable lifestyle. So do follow her and check out her posts to learn more about what she has to share, and few of those things she's going to share with us today here. So I'm very excited. I hope everybody else will also love what they are watching today. So stay with us till the end for some amazing content here. And without any further delays, let's get started. Over to you, Rima. Okay. Thank you. Thank you, Zara, for portraying me as a interesting person. I think I'm quite a boring person. Not that interesting the way you said, but still, thank you. And yes, as you have already said, I'm a bachelor's. I've done my graduation in BTech. I've done my BTech in biotechnology. And probably that was the time when I started thinking like we need to do something about environment, because in the last year of my graduation, I needed to choose a topic for my thesis, which I ended up choosing as a uh, degradation of plastic by microorganisms, which was quite an interesting topic, which I came up with, and I'm quite proud of it. So during the journey of doing that project, that thesis, I ended up at a landfill, which is in Pune, which is in Mumbai, actually. I went to Dombivli Kalyan landfill. It was quite a terrible experience, because if you guys haven't visited a landfill, then do visit it, because once you visit it, you get to know how terribly we are consciously or unconsciously disturbing the environment. Because the air which we were breathing, when we were standing over there and we just stood over there and we were looking at a building full of garbage. It was more like a layer of garbages, and the air was so so bad. Like I couldn't even breathe. And after coming back to home, that thing just daunted me. Like it was so bad. I was so traumatized with that experience. So later on, it just stayed with me that God, we need to do something about it. And probably at that time, I started searching for ways in which I can help nature, like not nature, like how I can be much more sustainable, and how I can help in reducing the waste and help the height of the landfill. So that's where my composting journey began. Oh, I started watching several n number of compost videos. You won't even believe the whole yeah, on the YouTube, how many how many people have done composting. I used to watch each and every one, oh, and it was wonderful, because I got to learn a lot. And the first time when I did compost, now the first batch when I made, it was so like uh, it was like as if you have earned a lot.
That kind of Yeah. satisfaction which I got after looking at that black gold was probably more than getting real gold. Because no, because the satisfaction which you get after making something waste into something treasure, like a treasureful thing, it's more like a soil, so it's unmatchable. So today we'll be talking about a lot of things, nothing specific. Like you won't get bored. I hope you won't be bored. So let's start with composting. What do you think, Vera? Yes, yes, absolutely. That's Okay. wonderful. And Uh, I really enjoyed hearing how your journey into this started. okay. Thank you. Okay, So yeah, let's let's begin. begin with composting. Yeah. So we'll be having an interactive session. Even Zara will be helping me. I already asked Zara that Zara, you're gonna talk to me while Sure, we are having this session. Okay. So the first thing, the basic thing, which I think everyone knows, but still I'll give a brief about composting. It's more like it's an organic waste which you converted into compost, like organic waste which we have at our home, like vegetable peels, fruit peels, the like this, a plate full of eggs, yeah. eggshells, Okay. and coffee ground. These are the organic things which we use and which we produce actually in our day-to-day life. And if you are vegetarian, then obviously the 80% of the waste generated at your place is of this, because we are vegetarian and probably we produce a lot waste, like organic Yes. waste. So at that time I thought, like, let's do something which will be helpful to the environment. So yeah, for compost there are only four elements, basic elements which are required: carbon, nitrogen, water, and air. So for this, we'll start with first thing which we require to make a compost is a container. This is a small container which I've used to Oh, wow. just show norm. Yeah, this is like a grape thing. Oh, Yeah, can grape we? container in which Yes, yes. So, like, can we do the composting in such a small container? absolutely you can do it, because the first time when I did my compost, I started with small, because Oh, this is like you can see it, right? If you yes. can see it, then you can feel it, like हाँ चलो कुछ हो रहा है करके. So that is this is like very simple. I think you can get it anywhere. Normal Yeah, jar also you can use, but है because ना? all the time I heard that you need a big bucket, you need a big drum, a big Okay, container to let absolutely. it sit and for to ferment and all. वो लेयरिंग करने के लिए उतनी स्पेस चाहिए आप होती है. नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि मैंने पहली बार जब किया था ना, तब मैंने छोटे में किया था, क्योंकि मैंने उससे पहले जब किया था ना, तब वो मैंने बड़े बकेट में किया था एंड इट एंडेड अप इनटू अ मेस. सो Oh, मैंने okay. बोला छोटे से चालू करते हैं. एकदम सक्सेसफुल जो मेरा पहली बार हुआ था ना, वो मैंने छोटे उसमें ही किया था. तो इट Okay, वाज़न्ट okay. लाइक दिस, इट वाज मोर लाइक अ बॉर्नविटा का होता है ना, वो प्लास्टिक का थिंग. हाँ, हाँ. Yes. हाँ, उसमें किया था. तो आई Oh, जस्ट मेड होल्स थ्रू आउट एंड वैसे. सो ओवर हियर एज यू कैन सी देयर आर सेवरल होल्स yeah. already This there. yeah, this container already has a lot of holes. Yes, and I have made few over here, like as you can Okay. see. So Okay. this is the container which I'm using for today's And it demonstration. has holes in the bottom also? Yes, yes, absolutely, it has, Yes. because that's necessary. Absolutely, absolutely, you Hmm. have right, Zara. Because Hmm. if it will not have holes at the bottom, it will get soggy. The Yeah. whole thing, the organic thing which is there, it will get soggy, Hmm. and it will turn into a messy thing, which is bad. I swear, it turns into a anaerobic process, so that doesn't look like a great start. So that's the reason you need holes. Yeah. So first thing first, we got the container. Then let's open it. Then what I'm gonna do, I have the browns. The browns, as you all know, these are the carbon. This is the Hmm. carbon. This is the nitrogen. And for air, we have made holes over Hmm. here. And water will apply a little bit. Okay. Okay. Can you do So me a first, favor?
can you keep the container where your eggshells are placed, because it's getting obstructed by the Yeah. logo here. Yeah, shells को इधर कर Okay. दो, container को इधर कर दो. ऐसे? Yeah, This is good? I can see the container now. Yes. ओके 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 ग्रेट। नहीं, मैं आपको ऐसे भी दिखा दूंगी, डोंट वरी। पूरा Okay. प्रोसेस दिखाऊंगी आपको। ओके, सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोना मेक अ लेयर। बेसिकली आपने प्रॉब्लली सैंडविच तो बनाया होगा या बर्गर बनाया होगा, है ना जरा? Don't ये mix तो it हर up किसी with ने की है। compost. No, yeah, I'll stop eating a sandwich then. No, it's more Getting like that. So yes, I get it. I understand वो traumatizing हो जाएगा the later on when you think about it, but it's more like making a sandwich. So Oh, the first layer which we need is this brown. ठीक है, आप थोड़ा सा brown ले लीजिए, एक basic so these layering are कर दीजिए। normal cardboard pieces that you've cut. Yes, yes. I've used the cardboard pieces. People use leaves as well, which is good, but I don't have the accessibility. That's the reason I chose this. Okay. Either this hay or any brown thing which you can use. Probably the one which you get in the vegetables when you order it online. When you Hmm. order vegetables online, you get brown paper, right? Cardboard like Yes. thing. Probably you can use that also. Okay. Okay. Some people use even So soil, right? एक layer सॉइल, soil. यस। हाँ. हाँ, एक लेयर सॉइल का वो लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें है ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, बट Yeah. हमारे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करने के लिए ये आर टेकन दिस कर्ड। एक Okay. एक लेयर में आप डाल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। सम पीपल डोंट हैव द एक्सेस फॉर सॉइल, तो Yes. आई स्टार्टेड विद दिस लाइक दिस। सॉइल में ना क्या करती हूँ, सॉइल और कॉम्पोस्ट आई पुट इट एट द टॉप, जिससे कि है ना वो flies and all, they don't come and just sit on this and lay their eggs. Hmm. ओके। Got it. हाँ, Hmm. तो फर्स्ट लेयर आपका ये हो गया, ब्राउन का हो गया। सेकेंड आपका, आपका जो भी वेजिटेबल्स है, मेरे पास वाटरमेलन का शेल्फ है, वाटरमेलन का आउटर कवरिंग है, वो मैंने डाल दिया, और चीकू है थोड़ा सा। ठीक है, Okay. तो दिस आई हैव मेड द सेकंड लेयर। ठीक है, वेजी का सेकंड, वेजी वाला आ रहा है। Okay. ओके, एंड दिस अगेन द ब्राउन। ठीक है, Any specific और measurement कि इतना thick ये वाला layer होना चाहिए? नो नो नो, इट्स मोर लाइक 1:2। नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि भाई आपको जैसे 1:1 रखते हैं, बट आई कीप इट 1:2, लाइक वन प्रपोर्शन अगर इसका होगा ना, ऑर्गेनिक वाला रहेगा आपका, लाइक वन हैंडफुल ऑफ ऑर्गेनिक, देन वन हैंडफुल ऑफ टू हैंडफुल ऑफ द Brown. ब्राउन मैटर, brown. Okay. 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 So to introduce now, we don't have any kind of microorganism in this to degrade this. Hmm. So what am I gonna do? I'm gonna introduce. I'm gonna put a little bit of curd, yogurt. Okay, Okay. so that all of us know that there are bacteria in it, good bacteria in it. Hmm. So they will help in degrading it. Yes. And on top of this, I have a little bit of compost. If you want, you can put soil. But if you don't want, you can just one second, I'll just show it to you properly. एक मिनट, ठीक है, अच्छे से Hmm. ऊपर का एक लेयर बना दीजिए। Okay. ये ठीक है, कंपोस्ट है जो आपने घर पे ही बनाया है? हाँ ये कॉम्पोस्ट है, ये मैंने खुद ने बनाया है। ओके, अगर किसी के पास नहीं ठीक हो है, तो व्हाट डू यू तो फिर आप सजेस्ट? सॉइल डाल दीजिए, नो प्रॉब्लम, ओके। सॉइल डाल दीजिए। मैं हम्म। ये इसलिए डालती हूँ जिससे कि है ना ये ढका रहे, एंड फ्लाइज एंड रैट दे डोंट कम ऑन टॉप ऑफ इट एंड जिस अंदर जाके वो कुछ करे। हाँ। मैगेट्स वैगेट्स आना इज गुड बिकॉज दे आर गुड फ्लाइज विच विल कम एंड हेल्प इन डिग्रेडेशन, हम्म। बट ये फ्लाइज वो सब ठीक नहीं है बिकॉज इट विल ओके। जस्ट एंड अप मेसिंग अप। ठीक है, हम्म। फिर आपको जस्ट हैव टू क्लोज इट and just keep it at a corner. ओके। That's it. Any That's it. specific area where it should be? Sunny area, Uh, shady area? it shouldn't be the area where you should keep. It shouldn't be like shady area. It should be where the aeration is proper. It mainly Okay. depends on aeration. If you Hmm. keep it in a closed area where there is no proper aeration, you will Hmm. end up getting a messy thing.
But ओ, if you have a proper area where even near the gallery you can keep it. ओके। तो Okay. It सनलाइट का mainly क्या रहता है? कितनी नहीं, सनलाइट चाहिए? सनलाइट का इतना कुछ नहीं रहता. इट इज मोर लाइक ऑन द टेम्परेचर. ऑलराइट। हमको नॉर्मली हमको लगता था कि ये बाहर रखेंगे तो अच्छा है, बट रेनी के टाइम पे बाहर रखना इज नॉट अ गुड आइडिया. तो हम्म। इसको एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए रहता है, और एरेशन इज इम्पोर्टेंट. ओके। ठीक है. तो आफ्टर 3 to 4 months, आफ्टर देखिए कैसा होता है, समर्स में कंपैरेटिवली जल्दी है ना कंपोस्ट बनता है कंपेयर टू विंटर्स. विंटर्स में 4 to 5 months लगता है मिनिमम. एंड ओके। समर्स में, हाँ, एंड समर्स में इट टेक्स हार्डली 2 to 3 months. 2 months भी वो वेरी करता है कि आपका कितना, आप उसको एरेशन प्रॉपर दे रहे हैं कि नहीं, आपने है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रॉपर तरीके से, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में दिया है कि नहीं. अगर नहीं तो 3 to 4 months में आराम से हो जाता है. ऑलराइट। सो आफ्टर 3 to 4 months you'll get something like this ओ, proper. कैन यू सी इट जरा? यस यस। हाँ, आप इसको और अच्छे से अगर सीव करेंगे तो फिर आपको और अच्छे से माइन्यूट वाला एकदम सॉइल टाइप टेक्सचर यू विल गेट हाँ। इट प्रॉपरली. हाँ, ऐसा ऐसा रहता है थोड़ा. ओके। ओके. वंडरफुल। या। या. तो So this is इसको what composting is about. थोड़ा सा उसको, डू यू कीप स्टरिंग इट, ऊपर नीचे करना, Yes, एरेटेड? yes, yes, yes. Absolutely, absolutely right. Thank you, Zara, for helping me out. So, what do I do once a week? Like once or ओके। twice a week, what I do, I just turn it. हम्म। The substance which is there below, I'll just turn it and keep it on the top. That's it. ओके। I try to introduce air as much as possible, हम्म। because the air and the temperature and the microorganisms, they all help in degradation. हम्म। And Yeah. since there are so many holes, it will be, And yes, water will be absolutely. oozing out of. Holes, So, perfect. ये साइड वालों के लिए perfect, but for the middle thing, for the middle part, we hmm, can introduce air through like आपके पास स्टिक होगा, या फिर आपके पास कुछ भी एक ऐसा कुछ भी एक स्टिक टाइप होता है ना, तो आप उससे एरेशन कर सकते हैं. दैट्स इट. okay. इट्स So do you नॉट अ keep, रॉकेट साइंस. हाँ, कुछ हाँ, बोलिए कंटेनर नीचे बोलिए. रखते हो हाँ. वाटर कलेक्ट करने के लिए? हाँ, देखिए अगर है ना आपका देखिए कि ज्यादा बड़ा रहता है, जैसे हमारा बकेट होता है, दिस इज वेरी स्मॉल थिंग. इसको हम्म। है ना, अगर आप एक नॉर्मल, देखिए ऐसा एक ये रखेंगे, इसमें भी अगर रखेंगे ना, तो जो भी इसका लिक्विड पार्ट जो लीच आउट होगा, तो है ना हम्म। इसमें कलेक्ट हो जाएगा. वो आप है ना प्लांट्स में डालने के लिए एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं. यस। ठीक है. तो वैसे भी होता है, एंड इसको टॉप को भी कवर करना इम्पोर्टेंट है. एज इसमें डायरेक्टली है ना ये था, देखिए, मगर इसमें नहीं है तो आपको इसको टॉप को भी कवर करके रखना चाहिए. ओके। हाँ. That's the whole process when it comes to composting. Any question? इंटरेस्टिंग। नो। You've explained I it hope so I well, was. and छोटे से कंटेनर में you have shown कि how to do Hmm. it. I was always And that. worried कि मैं कहाँ से बड़ी bucket लाऊं, how do I start, and Abs- what do I do? I don't have access to soil, I don't have you know a खुला एरिया नहीं है मेरे खुला पास। एरिया नहीं है. हाँ हाँ. Yeah. वो होता है, अब वो कॉमन ऐसा चीजें रहती हैं जो हमको रेस्ट्रिक्ट करती है कॉम्पोस्टिंग चालू करने से. बट डोंट वरी, यू कैन स्टार्ट इट स्मॉल, एंड इफ यू थिंक लाइक यू आर गुड एट इट, देन बकेट पे आ जाइए, और फिर और अच्छा किया तो फिर खंबा पे आ जाइए. वो बेस्ट है. बिकॉज नॉर्मली प्लास्टिक से बेटर आप खंबे में करेंगे ना. खंबा एक लाइक पॉटेड टेराकोटा वाला ये रहता है, मटेरियल रहता है, आपने प्रॉब्लली सुना होगा. तो हम्म। उसमें करेंगे ना तो और अच्छा रहता है, क्योंकि टेराकोटा जो मटेरियल है उसमें है ना एरेशन का बहुत अच्छे से होता है. तो उसमें आपको Yes. प्रॉपर ऐसा एरेशन करने की जरूरत नहीं है, उसमें ऑटोमेटिकली एरेशन होता रहता है. ओके। एंड यू टॉप या. दिस अब जब थोड़ा सा कंपोस्ट हो गया है तो हाँ. ऑब्वियसली वो हाइट कम हो जाएगी उसकी, तो फिर डू यू टॉप हाँ. इट? हाँ. इट्स मोर लाइक, देखिए अगर है ना यहाँ मेरा पूरा एक लेयर नहीं बना, आई कैन मेक वन मोर लेयर फॉर दिस. यू कैन सी हाँ। दिस यस। स्पेस लेफ्ट. Okay, या। so I can make one more layer.
then Hmm. as the degradation goes on, ये Hmm. ये इसका है ना लेवल नीचे होता रहता है. ओके, तो Hmm. यहाँ तक आ जाएगा तो I'll top it more. Same Okay. like organic and then the cardboard wala thing or Okay. the leaves which if you have. तो व्हाट आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज विद कि नीचे वाला तो लाइक हाफ वे डिकम्पोज हो गया है, बट व्हेन यू टॉप इट Absolutely. अप विद द फ्रेश थिंग उसको टाइम हम्म, लगेगा. तो ये पूरा हम्म. मिल के कब रेडी हो जाएगा? हाउ लॉन्ग डज दैट टेक? पूरा यू गेट मिलके माय? देख, आई अंडरस्टैंड. देखिए आप क्या बोल रहे हैं कि हम लोग है ना इसको नीचे का है ना कॉम्पोस्ट हो मतलब डिग्रेड डिग्रेड होना चालू हो जाएगा एंड आप फिर उसको फ्रेश डाल रहे हैं, तो वो यस. टोटल मिला के हाउ मच टाइम विल इट टेक. हम्म. हम क्या करते हैं, मैं नॉर्मली क्या करती हूँ कि एक पूरा बकेट को है ना भरती रहती हूँ, फिर उसको है ना जो एकदम टॉप तक ड्रिंक तक भर जाएगा ना, देन आई कीप इट एट द कॉर्नर एंड आई टेक अनदर बकेट, बकेट या फिर कुछ भी. ओके. तो उसको आप है ना अलग रख दीजिए, क्योंकि फिर है ना आप उसको बार बार ऊपर वाला फ्रेश वाला लाएंगे तो फिर एक प्रॉपर उसको बनने में टाइम लग जाएगा. यस. तो ओके. दैट्स तो अ रीजन, दैट्स अ रीजन बहुत है ना, बहुत सारे कंटेनर्स रहते हैं कंपोस्ट बनाने वालों के घर पे. हम्म. सो हाँ, एक बकेट भर वैसे दिया, उसको साइड में रख दिया, भूल गए साइड टू में मंथ्स 3 मंथ्स भूल तक. गए. हाँ, दो हाँ. तीन महीने उसको देखो ही मत, मतलब ऐसा एरेशन के लिए रखते रहिए, क्योंकि हाँ. फिर वो जितना जल्दी होता रहेगा ना फिर. यस. ओके. हाँ, ऐसा है. एनी ग्रेट. अदर डाउट देयर? No, no. But आई I होप like आई वाज. this. ये क्या ग्रेप्स का कंटेनर वाला? I'm gonna try this. Absolutely, please do try and let me know if you have any doubt. Sure, sure, sure. हाँ, चलो, ठीक है. moving on to the next topic. What else do you have today? ओके ओके, सो ये कॉम्पोस्ट वाला तो हो गया आज हमारा. सेकेंड थिंग विच आई वांटेड टू टॉक अबाउट इज जीरो वेस्ट. आजकल मैंने बहुत सुना है कि बहुत जीरो वेस्ट चल रहा है, बट हमें ये नहीं पता कि हम इंडियंस एक्चुअली जीरो वेस्ट पहले से है ना कंटिन्यू कर रहे हैं. इट इज लाइक Hmm. नथिंग न्यू फॉर अस. ये जीरो वेस्ट एक वर्ड आया है, इट्स नॉट Yeah. समथिंग न्यू फॉर अस. हम लोग अभी भी, मुझे याद है, हम लोग है ना वो, हमारी मम्मी हमारे लिए कपड़े खरीदती थी, तो अगर बच्चा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, कैन यू सी इट, Yes, बच्चा yes. इतना बड़ा है तो उसके कपड़े इतने बड़े लाएंगे, Yeah, जिससे कि है ना I know. yeah, absolutely. I remember it because वो वाला ना, we are four kids. तो बड़ा वाला पहनेगा, फिर छोटा वाला पहनेगा, फिर छोटा वाला पहनेगा, फिर मेरे पास आता था. तो तो we have done that a lot. तो Yeah. मतलब ऐसा नहीं है, we have used reused in our day to day life a lot. बट Yes. अभी हम, बट कोई कोई चीजों में हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं कि जैसे ये क्या बोलते हैं, लाइट जल रही है तो मतलब उसको छोड़ दिया, चलो ठीक है जलने दो ना. ऐसा नहीं. लाइक फ्यू थिंग्स विच वी कैन डू इन अ डे टू डे लाइफ विच विल बी हेल्पफुल फॉर अर एनवायरमेंट ऑल्सो, एंड यू विल फील ग्रेट कि भाई चलो हम मैंने कुछ अच्छा किया करके. बिकॉज देखिए, जब से मैंने ना ये थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के बारे में पढ़ना चालू किया ना, लाइक आई आई रियली वांट टू नो दैट इट्स नॉट द बिग थिंग्स व्हिच मैटर्स, बट इट्स द स्मॉल थिंग्स इन आवर डे The टू डे little लाइफ thing. व्हिच Yeah. व्हिच मैटर्स द मोस्ट. Yeah. वो ऐसे बोलते हैं बूंद बूंद से ये सागर बनता है, ऐसा Yes. ही The वाला है little things पूरा. that make a lot of difference. Absolutely. That's the whole point. You just have to be conscious. You need to be environmentally conscious every day. Like ऐसा नहीं Yeah. कि नहीं नहीं मुझे ना environment के लिए कुछ करना है, बट थोड़ा सा अपने लिए कॉन्शियस हो जाइए ना, तो फिर आपको वो पता भी नहीं चलेगा और अनकॉन्शियसली आप है ना ये एनवायरमेंट रिलेटेड चीज करना भी चालू कर देंगे. Yeah. It becomes a habit and Day lifestyle. habit. Yes. Absolutely, absolutely. That's what I wanted to say. और दो तीन चीजें जैसे हम लोग है ना कर सकते हैं लाइक डे टू डे लाइफ में जो हेल्पफुल होगी Hmm. हमारे लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी, वो थोड़ी से मतलब कि जैसे मैंने कहा, आई एम बीइंग अर्थवाइज करके मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, तो आई एम नॉट, आई डोंट से कि आई एम एक्चुअली अर्थवाइज पर्सन. आप मेरे Yeah. से पूछ भी रहे थे जरा, राइट? Can you tell us, what does that mean? Word Earthwise. Exactly what does it Yes. Actually, I was trying to get to a name कि वो थोड़ा सा डिफरेंट हो एंड थोड़ा सा लाइक आई विल improve as a person. I wanted to be that kind of person. That's the ideal kind of person which I want to be. But
I'm still not there, it's far away. तो ओके वो ऐसे करते करते बीइंग अर्थवाइज हो गया। ओके, द तो वाइज इज द मतलब वो इंटेलिजेंट वाला वाइज है वो? इंटेलिजेंट वाइज, हाँ इंटेलिजेंट वाला वाइज है वो। ओ इट्स मोर ओके लाइक अर्थ। हाँ वाइस वैसा वाला वाइस, अच्छा आपने वाइज। दूसरा वाला सोचा था। या नो, आई वाज गेटिंग कंफ्यूज्ड, वो लाइक नो 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 पढ़ने नो में नो नो। नहीं समझ आ रहा था कि व्हाट इज दैट एग्जैक्टली मीन्स। No, no, no. It was more like I wanted to be earthwise. जैसे कि है ना, देखिए आपको है ना, आप कुछ कर रहे हैं, आप उसमें है ना, मतलब एक समझदारी आ जानी चाहिए आपको कि भाई एग्जैक्टली। तुम अर्थ को है ना कैसे वाइजली हैंडल कर सकते हो। You're यस destroying it. You're kind of destroying it. It's not only you. It's we, all of us, who are destroying it in a way or so. सो यस दैट वाज द होल आइडिया, लाइक चलो यार ऐसा कुछ करते हैं जो एक्चुअली मैटर करता है। वो मेरे को, मैं इंस्टाग्राम देखती रहती थी, तो मैं देखती थी डांस वीडियोस एंड ऑल, बट दैट वाज माय इंटरेस्ट। मैंने बोला चलो ऐसा कुछ इसी चीज पे हम बात करते हैं जो लोगों को लगता है बोरिंग है, मगर एक्चुअली बोरिंग नहीं है। अगर आप यस थोड़ा सा है ना उसमें एफर्ट डालिए ना, तो बिल्कुल बोरिंग नहीं है। तो ऐसा था। एंड चलो वो थोड़ी है ना स्टेप्स की बात करते हैं, जैसे हम लोग है ना कैसे अर्थ वाइज हो सकते हैं। हाँ जैसे देखिए हमारे पास, हम सुबह उठते हैं, तो व्हाट डू वी डू, लाइक फर्स्ट थिंग। जहरा चलो आपसे पूछते हैं, व्हाट डू यू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? ब्रश योर टीथ। परफेक्ट, रुको 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 रुको, यू ब्रश योर टीथ। आपका हाँ ब्रश प्लास्टिक का है या कैसा है? ओके प्लास्टिक का। मैं आपको ये पूछूं कि आपको क्या लगता है कितने टाइम में वो डिग्रेड हो जाएगा? व्हाट डू यू थिंक, प्लास्टिक लाइक रैंडम नंबर बताइए। 100 इयर्स लग जाते हैं प्लास्टिक को। हाँ 80 to 100 years। एब्सोल्युटली फ्लेक्स, या एब्सोल्युटली। चलो आपको लाइक एटलीस्ट ये पता है। हाँ हाँ चलो एटलीस्ट आपको ये पता है, तो अब नेक्स्ट टाइम है ना, जाके वो प्लास्टिक वाला मत लेना। इस टाइम ले लिया ठीक है, अब थोड़ा धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि भाई एक बार में है ना अर्थवाइज बनना है, धीरे धीरे हाँ। करके हम लोग बन सकते हैं, है ना। यस तो आप है ना एक अपना ब्रश चेंज कर सकते हैं, जिससे कि वो एटलीस्ट हमारा ये मॉर्निंग तो राइट हो। एंड फिर आप है ना ब्रश करते हैं तो फिर रनिंग वाटर में करते हैं या कैसे करते हैं? या रनिंग वाटर। रनिंग वाटर ना कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे ही करती थी। तो मैंने ना लिटरली लिटरली, आप झूठ मानोगे, मैंने इतना इतना बड़ा एक मैंने कप लिया है जो मैंने रखा है अपने वॉशरूम के साइड में, और उतने ही पानी से है ना मेरा ब्रशिंग हो जाता है। हाँ एक्चुअल में यू डोंट नीड टू मच ऑफ वाटर, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग वाटर while you यस just keep that tap open। वो बेसिक मतलब छोटी चीजें हैं, देखिए इतना कोई मैंने बड़ा बात नहीं बोला, बहुत छोटी चीजें हैं जो हम लोग है ना कंसिडर कर सकते हैं। या और जैसे आप है ना ब्रश करने जाते, ब्रश का हो गया। फिर आप है ना देखिए आप नहा रहे हैं, इफ यू आर टेकिंग हाफ एन आवर यू आर टेकिंग हाफ एन आवर टू बेथ, इंस्टेड ऑफ हाफ एन आवर व्हाई डोंट यू टेक लाइक 20 मिनट्स ले लो, चलो 10 मिनट ज्यादा हो जाएगा तो 20 मिनट में नहा लो, जिससे कि है ना पानी उतना सेव हो सके। फिर हम्म हमारे पास है ना क्लीनिंग क्लीनिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं जरा? कोई कौन सा है ना प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मतलब वैसे स्पेसिफिक मत बताना, केमिकल ही यूज करते होंगे हाँ प्रोबेबली, ब्लीच ब्लीच। है ना। हाँ ब्लीच टू क्लीन क्लीन द टॉयलेट्स एंड द हाउस, एज ब्लीच नहीं, मतलब घर के लिए ब्लीच नहीं, बट हाँ आप है ना केमिकल ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। उसके बदले अगर मैं कहूँ आप बायो एंजाइम यूज कीजिए, जस्ट सजेस्टिंग। अब बायो एंजाइम भी यूज कर सकते हैं। बायो एंजाइम इट्स मोर लाइक आपको सिट्रस फ्रूट्स का है ना फर्मेंटेड वर्जन है बस, और कुछ नहीं है उसमें। हम्म आपने सुना होगा शायद से जहरा, बायो एंजाइम के बारे में yes प्रोबेबली। yes, heard a lot about it. I really want to learn how to do that also। इट्स एक्चुअली वेरी इजी, आई जस्ट गिव अ ब्रीफ। 1:3:10 ऐसे सब बोलते रहते हैं, इसका बस ये मतलब है 1% 1 पोर्शन। अगर आप इसका ले रहे क्या बोलते हैं, गुड़, जैगरी, हैव यू हर्ड अबाउट इट? yes। जैगरी, हाँ। तो वन वन पार्ट आपका जैगरी होता है, 3 पार्ट्स आपका सिट्रस फ्रूट्स, आपका लेमन हो गया या ऑरेंज पील्स हो गया, वो वाला ले लीजिए। फिर हम्म 1 लीटर ऑफ वाटर, वो ओ आप एक कंटेनर में, वो आप एक है ना प्लास्टिक की एक बोतल होती है या फिर आपके पास जग है, किसी में भी आप है ना उसमें रख दीजिए, मगर उसका है ना लिड होना चाहिए, क्योंकि वो ओके फर्मेंट होगा।
या ओके। सो फर्मेंट होगा उसके बाद इट टेक्स अराउंड अ मंथ और सो, बिकॉज उसको वो फर्मेंट होने में आपको है ना टाइम लगता है। तो आपको उस पे सिर्फ अपना एक डेट लिख देना है जिस दिन आपने वो किया है। वो प्रोसेस 1 मंथ 2 मंथ में हो जाएगा, आपको सिर्फ उस पे डेट लिख दीजिए। एंड इनिशियल डेज में आप है ना बस उसका वो गैस रिलीज होता है, जो फर्मेंटेशन में क्या होता है गैस रिलीज होता है, तो यू जस्ट हैव टू ओपन इट, ओपन द ओके। लिड। उसका है ना हम्म। वो सब जैसे क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक पे है ना फिज आता है ना, वैसे ही वो हम्म। फिज आएगा। आपको उसको रिलीज करना है एंड देन आपको रख देना है, दैट्स इट। आपको 2-3 दिन 1-2 वीक आपको ये करना है, और उसको बस एक डार्क एरिया में रखिए। तो ऑटोमेटिकली आपका है ना ऑलराउंडर क्लेंजिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। आपको ना तो है ना एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत और ना कुछ, एंड इट इज वाओ। 100% ऑर्गेनिक एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। हाँ। तो आपको और क्या चाहिए? व्हाट ऑल कैन वी क्लीन यूजिंग दिस? आप वॉशरूम्स क्लीन कर सकते हैं, आप है ना अपना जो पोछा लगाते हैं घर पे, लाइक हॉल एंड एवरीवेयर, फ्लोर। आप उस पर क्लीन कर सकते हैं। आप क्या बोलते, इट्स मेनली फॉर क्लीनिंग पर्पस एंड पीपल ऑल्सो प्रिफर यूजिंग इट वेल बेदिंग, बट आई डोंट प्रिफर यूजिंग दैट। वो भी हम्म। करते हैं। किचन टॉप पे भी आप यूज कर सकते हैं। आपको जो आप विम बार यूज करते हैं, सॉरी फॉर हाँ, यूजिंग द नेम, बट डिश हाँ तो आप डिश उसके वॉश के लिए भी, हाँ। आप आराम से इसको है ना आप रिप्लेस कर लीजिए, तो आपको ओके, वो दिस जो कैन बी यूज्ड एज अ डिश वॉशिंग लिक्विड। एब्सोल्यूट डिश, यस एब्सोल्युटली, इट्स अ अच्छा। ऑलराउंडर क्लीनिंग थिंग। आप इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ना, उसमें आप है ना रीठा डाल दीजिए। रीठा हम सबको पता रहेगा कि वो है ना एक नेचुरल ये है, क्या बोलते, सोप, सोप नट उसे जैसे बोलते हैं। यस। यस, इट्स अ हाँ। सोप नट। तो आपको वो जो झाग झाग का आदत रहता है ना, तो उससे आपको वो भी मिल जाएगा एंड क्लीनिंग भी हो जाएगा। तो हाँ। इट्स मोर लाइक एन ऑलराउंडर थिंग, आप कुछ भी क्लीन कीजिए उससे, बेस्ट है वो। ओके। तो हाँ, ये हाउ वंस दिस इज रेडी, डू वी नीड टू डाइल्यूट इट या यू कैन यूज इट एज सच? no, 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 please don't use it as such. If the stain is like really hard या फिर है ना बहुत ऐसा ऐसा ग्रीस टाइप है, तो फिर आप ना डायरेक्टली उस पर यूज कर सकते हैं, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन। बट आपको अगर कहीं यूज करना है तो उसमें वाटर उसको डाइल्यूट करके ही यूज कीजिए, ओके। है ना। एंड व्हाट अच्छा अबाउट है। फर्नीचर, टॉप्स, टेबल टॉप्स? आप उससे कुछ भी क्लीन कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। आप उससे, ओह, वो एक ऑलराउंडर क्लीनिंग थिंग है। आप है ना आपको अपना मिरर साफ करना है वो कीजिए, आपको अपना फैन साफ करना है वो कीजिए, आपको अपना घर साफ करना है वो कीजिए। इट्स लाइक ओके। ऑलराउंडर क्लेंजिंग थिंग। आपको अपना वॉशरूम्स भी क्लीन करना है ना, वो भी आप क्लीन कर सकते हैं उससे। वॉशरूम्स में मैं वही बोल रही थी, आप कॉन्सेंट्रेटेड थोड़ा वर्जन यूज करें, मतलब वो गॉट इट। फर्मेंटेड वर्जन जो आप यूज करेंगे ना, तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा स्टेन्स रहते हैं, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं। और अभी हमारा क्लेंजिंग का बात हो गया, तो आपको और कोई डाउट है जरा? या आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि हाउ इफेक्टिव इट इज, लाइक ब्लीच से तो हमको मालूम है कि कैसे रिजल्ट मिलता है, तो ये कितना एब्सोल्युटली, स्ट्रॉन्ग है और ये कितना इफेक्टिव होता है? ये काफी इफेक्टिव होता है। मैंने खुद ने यूज किया है, तो हम्म। बट मेरे भाई बहनों को उसका स्मेल अच्छा नहीं लगता, दैट्स द रीजन मैं थोड़ा अपने तक ही रखती हूँ, अपने भाई बहनों तक नहीं डाल रही। बिकॉज बहुत लोगों को है ना उसका स्मेल नहीं पसंद, but मुझे आई एम ओके विद इट बिकॉज इट्स मोर सिट्रिक, सिट्रिक स्मेल हाँ, है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी वो लगती आपको है ना, हाँ, थोड़ा अच्छी लेमनी। अच्छी लगती है। हमारा डिश हाँ ना, वॉशिंग लिक्विड भी तो मैं लेमन का उसका ही लेमन एसेंस का फ्लेवर देता है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाँ तो वो वैसा ही रहता है। आपको है ना बस कौन आपको, आप जैसे पूछ रहे थे कि बाथरूम में कैसे कितना इफेक्टिव होता है, मैं हम्म। इसलिए बोल रही थी आप कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन डालिए, उसको है ना थोड़ी देर रहने दीजिए उस पर, तो वो अपने आप क्लीन हो जाएगा। ओ, तो आपको ओके। ब्लीच जैसे, लाइक ब्लीच में कैसा सा स्मेल आता है, इसमें ऐसा स्मेल नहीं, नहीं आता। स्ट्रॉन्ग। हाँ, हाँ, एंड इट हाथ भी इट खराब डज हो वर्क जाते फॉर। हैं, कपड़ों पे गिरो, हाँ आप, कपड़े भी खराब हो जाते हैं, मेरे बहुत सारे कपड़े खराब हुए हैं ब्लीच से। बट आई कांट लिव नहीं विदाउट नहीं ब्लीच। नहीं, हाँ वो ब्लीच ना हमारे ऐसा वो मेंटालिटी में है कि भाई नहीं ब्लीच है ना हाँ, एकदम ब्लीच सही भी साफ कर कर दिया, देता है। साफ हो गई, हाँ, वो 100% जर्म्स बहुत किल हो गए, हाँ सेटिस्फाइड। 100%, एब्सोल्युटली वो एकदम इंडियन ये सेटिस्फैक्शन के लिए बेस्ट रहता है। हाँ, मगर अगर मैं बोली आपने ट्राई ट्राई कीजिए एक बार, गिव इट अ श्योर, ट्राई एंड देन डेफिनेटली। लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट, बिकॉज बहुत लोगों का, मतलब मैंने खुद ने भी ट्राई किया है, इट आर वर्क्स यू गोइंग ग्रेट। टू शो इट टुडे?
Like not today. Okay, I didn't okay. prepare. I just came out. Like I was talking about it. It just came out. Absolutely. I'll put a video, Yes, yes. and I I'll check already it have out a now. video. I'll absolutely put a video for you only, Zara. Sure, sure. हाँ हाँ. तो ऐसे हम लोग है ना थोड़े थोड़े steps, like if you're traveling, Hmm. instead of taking if नहीं, instead of going by a car, if there is only Hmm. one person, don't go by a car, please. But if there are several people, if you're carpooling, then that is great. Hmm. Because why to waste the resources? I Yes. personally I personally travel in public transport. Hmm. And if someone is going that way in the similar direction, then I just ask him or her that if you're going in that direction, please take me along, and then we share the fare accordingly. Yeah. That Yeah. is that is how you actually become Earthwise. Yeah, because these are the small things which matters the most. Yes. थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा आपको to reach to your destination, but in the long run when we all start doing this, because this is what we were doing before. हर किसी के पास कार एब्सोल्युटली पहले नहीं होती थी, नहीं हर थी, किसी के पास नहीं थी. साइकिल नहीं होती थी, so people used to like एब्सोल्युटली inform other people पहले से कि कल मुझे वहां जाना है, if you're going can you please drop me. तो क्या वो चीज है, एक या एब्सोल्युटली. एक प्रैक्टिस थी, बट धीरे हाँ. धीरे हम हमारे पास इतने रिसोर्सेज आ गए वी हैं कि हम उस चीज को हम्म. भूल गए हैं. उससे एक ये भी फायदा हो जाएगा आपको, उससे है ना कनेक्ट करने के लिए, एज अ ह्यूमन लेवल पे भी I कनेक्ट know. करने के लिए टाइम मिल जाएगा. हम लोग अभी इतना आइसोलेटेड हो रहे हैं अपने ही इसमें कि भाई दूसरे का ऐसा टाइम नहीं मिल रहा, हम लोग कनेक्शन बनाने Hmm. के लिए नहीं मिल रहा हमें टाइम. तो हाँ. वो एक तरीका हो जाएगा, आपका पैसे भी बच जाएंगे और आपका कनेक्शन भी बन जाएगा, अच्छा ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्ट. Yeah. तो वो भी मतलब इसके फायदे ही हैं ऑनेस्टली. आप है ना इसको अपने लाइफस्टाइल में डालिए ना, तो फिर इसके फायदे ही फायदे हैं. Yes. It not only it not only help you to grow as a person, but to help the environment as well. Absolutely. So these are few steps, and there are several more. I think I'm forgetting few, but I don't think there's more time, right? Yeah, Zara, we've covered already 40 nee, minutes. We can move on to the next absolutely. topic now. हाँ हाँ हाँ, no no, but I have really lot to talk about it, because आपको हर एक सेक्शन, हर एक रूम में जाएंगे ना, तो आपको हर एक रूम में है ना एक एक चीज देखने को मिलेगी. आप है ना उसको ये आप है ना ये सारी चीजें कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. जैसे आपके है ना कपड़े हो गए, आप उसको है ना अपने बड़ी बहन से छोटी बहन को दे सकते हैं, या फिर इंस्टेड ऑफ बाइंग न्यू क्लोथ्स, व्हाई डोंट यू जस्ट शेयर इट और स्वैप इट, कि भाई चलो आज ही मैंने पहन लिया, आज तुम पहन लो, ऐसे करके. Yes. Yes. Okay, आजकल ये भी तो so शुरू हो गया ना, प्री लव्ड स्टफ हाँ. बोलते हैं. Absolutely, People are giving absolutely. away their old stuff प्री लव्ड करके. या हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कर. सेकंड हैंड बोलते तो थोड़ा सा अजीब लगता ओके था. ओके, Now हाँ we हाँ have हाँ हाँ always हाँ. प्री लव्ड. हाँ. ओके ओके ओके, ये अच्छा है, ये मुझे भी नहीं पता था. थ्रिफ्ट हाँ. शॉपिंग करके भी मैंने सुना है, बहुत जैसा थ्रिफ्ट शॉपिंग करके हम्म. होता है. आई एम नॉट श्योर इफ इट्स रिलेटेड और नॉट, या बट आई थिंक द सेम. या सेकंड है ना, हाँ सेकंड वही हैंड ही होता है, क्योंकि वो यूज्ड होते हैं चीजें. हाँ हाँ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. गुड एंड कंडीशन. आपके, हाँ वो ये अच्छा है ना, ये अच्छी प्रैक्टिसेस है जो आपको एक नया फैब्रिक से आपको नया एक क्लोथ बनेगा. वो जो फास्ट फैशन हो रहा है वो आपको ये पूरा एनवायरनमेंट को बहुत अफेक्ट करता है. एक फैब्रिक बनाने में कितना रिसोर्सेस लगते हैं वो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि या. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ एनर्जी to make a new thing. So instead of making new, why don't you use the old? यस. यही यही प्रैक्टिस एक्चुअली हम कर रहे हैं पहले से, जस्ट वो अभी है ना अभी वो जो नया फैशन के उसमें आ रहा है तो हम लोग भूल जाते हैं, बस और कुछ नहीं है. एंड दिस इज द रीजन आई स्टार्टेड कि भाई चलो रिमाइंडर दे देते हैं कि हमें यस. उस तरफ नहीं जाना, हमें स्ट्रेट लाइन में चलना Yeah. है. एंड या, There's एंड nothing देयर wrong वाज and दिस वन. nothing like to be shy and embarrassed about to use एब्सोल्युटली old stuff, एब्सोल्युटली new stuff. एब्सोल्युटली. ये जो मैं पहनी हूँ ये मेरी बहन का है और मुझे कोई शर्म नहीं है. क्योंकि मैं बचपन से मेरी बहन के कपड़े पहन रही हूँ. आई हाँ. स्वेयर आई हैवंट इवन परचेज लाइक इन इन अ मंथ और सो. मैंने कोई अपना परचेजिंग ही नहीं किया 3-4 महीने में. एक्चुअली 3-4 महीने हो गए जब मैंने खरीदा ही नहीं है. मेरी बहन के ही मैं पहनती हूँ कि भाई तुम उनको है ना नया खरीदने का शौक है, तो मैं बोलती हूँ दीदी आप मुझे दे दो अपने वाले.
अब क्या करो, आप तो खरीदती रहती हो ऐसे करके। तो दैट इज समथिंग लाइक, ये हमारे बीच में ऐसा फनी ये रहता है, बट समथिंग, दिस इज द काइंड ऑफ प्रैक्टिस आई थिंक विच ऑल ऑफ अस कैन प्रैक्टिस। यस। या एंड हाँ, एक और मैं डीआईवाई की बात, मैं इतना डीआईवाई करती हूँ तो मैंने बोला कि डीआईवाई भी बता देते हैं। देखिए, मैंने ना, तो वो स्वीट्स होते हैं ना, स्वीट का डब्बा आपने देखा होगा, इसमें है ना ऐसे टाइप में मैं ऐसे पॉट्स बनाती हूँ, प्लांटर्स बना देती हूँ। तो आप भी है ना इसको रीयूज कर सकते हैं वो प्लांट्स को। फिर छोटे छोटे आपका ये भी रहता है, ये तो एक बिरयानी का एक्चुअली पॉट था, तो उसको मैंने ऐसे कर दिया है। वाओ। तो ये भी आप ऐसे छोटी छोटी You're a good चीजें हैं जो painter. बहुत मैटर। नो, नॉट दैट ग्रेट अ पेंटर, बट या थोड़ा बहुत ट्राई करती हूँ। तो आप भी है ना थोड़े ये जो भी हमारे ये पॉट्स रहता है, कुछ भी रहता है, आप उसको यूज कीजिए, रीयूज कीजिए। वाई टू Hmm. थ्रो इट, वाई टू मेक इट एंड अप एट लैंडफिल, आप इसको एक रिसोर्स बना लीजिए ना। Yes. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। एंड व्हाट डू यू थिंक, अभी वो पेपर वाला कर दे, Yes, yes, please. है ना? Wait for ओके ओके ओके। हाँ, ये एक्चुअली जहरा ने मेरे को बोला था प्लीज पेपर वाला करना, आपका वो अच्छा था, मैंने कहा चलिए ठीक है, आपके लिए करूंगी। ठीक है, वेट। So as I told you, she has interesting stuff on her page. I saw this on her Instagram page, and I just couldn't get over it. मुझे देखना रजिस्टर। था कि how to या, make दैट वाज paper रियली at स्वीट, home. दैट वाज रियली स्वीट ऑफ हर। वो देख के है ना जहरा ने मैसेज किया कि भाई ये वाला है ना चाहिए मुझे, मैंने ओके। देखिए, तो आई हैव फ्यू पेपर्स, ये यूज पेपर्स हैं। Mm-hmm. ये एक फन डीआईवाई सॉर्ट ऑफ मैं करती हूँ, आई जस्ट रिसाइकल माय यूज पेपर इनटू मेकिंग न्यू पेपर। तो Okay. ये पेपर्स है, न्यूज पेपर भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे आप है ना, अगर आप नोटबुक रहता है जिसपे है ना ओल्ड नोटबुक्स रहती हैं जो बचपन Old की रहती हैं, notebook. वो भी आप Yeah. यूज कर सकते हैं। या इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यू पेपर्स, आप ओल्ड पेपर लेके कीजिए। तो आपको बेसिक, मैं अभी आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ। ये जो Mm-hmm. पेपर रहता है, आप इसको फाड़ दीजिए, ठीक है, फाड़ दिया, ऐसे स्मॉल स्मॉल पीसेस कर दीजिए। ओके, Okay. एंड एक बाउल ले लीजिए, उसमें एक सोचिए आपने बाउल ले लिया, ठीक है, इसमें पेपर फाड़ दीजिए, इसमें Mm. डाल दीजिए, और फिर इसको सोक करके रख दीजिए ओवरनाइट। आई कीप इट फॉर ओवरनाइट, बट 3 to 4 आवर्स भी काफी है। ठीक Okay. है, Mm. फिर आपने सोक करके रख दिया, इट बिकम्स अ बिट सॉगी, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा अच्छे से। तो वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने क्या करती हूँ, उसको मिक्सर में ग्राइंड कर देती हूँ। तो मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद आई गेट अ पल्प, you get a pulp something like this, look. Okay. With the Okay, water. हाँ okay, हाँ अभी भी water निकल रहा yeah, है. with, yeah with water, because Mm. इसमें थोड़ा और पानी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि वो ग्राइंड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इट्स समथिंग लाइक Okay. दिस, इट्स पल्पी एज यू कैन सी, Mm. बहुत पल्पी रहता है। ठीक है, हाँ. फिर मैं क्या करती हूँ, इफ यू वांट, इफ यू वांट यू कैन ऐड कलर एज वेल। देखिए, जैसे मैंने ना यहाँ पे थोड़ा कलर टाइप, एक मिनट, थोड़ा पानी, वेट अ Oh, it's सेकेंड, okay. It's okay. नो नो, वेट वेट वेट, आपको ऐसा दिखा देती हूँ, ऐसा है, हाँ. ठीक है। Yeah. इसमें मैंने पानी में मैंने ऐसा कलर यूज किया है, जिससे कि एक Okay. कलरफुल पेपर बने। तो So आई, what is, which color is this? Poster दिस इज colors? ग्रीन, नो नो, हाँ, दिस इज पोस्टर कलर, Okay. वाटर हम कलर फूड कलर ऑल्सो यू भी यूज कैन कर यूज। सकते हैं? हाँ, यूज कर सकते हैं, मैंने खुद ने हल्दी यूज करके भी बनाया है। Okay, okay. हाँ, आप हल्दी, ऐसे नेचुरल कलर्स होते हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो कोई Oh, प्रॉब्लम नहीं है। इट्स, अगर आपको नहीं भी यूज करना है, आप, मैं डायरेक्टली ये वाला भी यूज करके बना सकती हूँ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। okay. तो या, एंड तो ग्राइंड करते वक्त थोड़ा सा बता दें हाउ स्मूथ शुड बी द पल्प. कितना स्मूथ ग्राइंड ओके करना है, कितना कोर्स करना है, ओके ओके, द थिंग टेक्सचर. इज, ये देखिए, एक आपका है ना ये पल्पी, ऐसा लाइक, कैसे बोल सकते हैं, आपको प्रॉपरली ग्राइंड करना है उसको, एंड ओके. एक एकदम स्मूथ टाइप होना चाहिए। ऑल राइट. जितना देखिए, आप देख रहे हैं ये अच्छे से है ना दब रहा है, कैन यू ओके. सी इट, यस यस. कैन यू सी इट जरा, या, यस.
तो एक प्रॉपर एक है ना, ग्रैन्युल ग्रैन्युल दिखता है बट स्मूथ एक होना चाहिए, क्योंकि फिर पेपर है ना स्मूथ नहीं बनेगा, ऑल वरना वैसे राइट. बीच बीच में ग्रैन्युलर रहेगा. ओके, ओके. गॉट Okay. इट. So after making that, I added color, हम्म. any color of your choice. मैं तो है ना हल्दी का भी बनाती हूँ, तो मैंने वो भी यूज किया है. फिर I took a container like this, okay, हम्म. and second, yeah, I took a container like this and a छन्नी. everyone, हम्म. ये इसमें मैंने पानी डाल दिया, इसमें छन्नी है. ठीक है. फिर आपको ये जो आपने वाटर वाला यूज किया है, इसमें मैंने हाँ. फिर ये जो है ना, इसमें आपने थोड़ा और वाटर कंटेंट आपको बढ़ाना है, जिससे कि है ना जब ओके. आप पोर करते हैं, एट द टाइम ऑफ पोरिंग यू नीड अ लिटिल बिट डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ इट. दिस इज काइंड ऑफ टू पल्पी, दिस इज अच्छा. कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसमें आप है ना थोड़ा पानी डाल देंगे तो वो बेटर पड़ेगा पोरिंग के टाइम पे. एक इवन लेयर चाहिए हमको. ओके. मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको एग्जैक्टली दिखाती हूँ कि देखिए, एक ये लिया मैंने मैंने इसमें ऑलरेडी ये पूरा डाल के रखा है. ऑल ऐसे राइट. लिया. ओके. मैं इसको पोर कर रही हूँ. ओके. ठीक है. दिस इज वाटर विच इज कमिंग आउट ऑफ इट. Second, I'll just show this. I'm just removing the excess water. देखिए, can you see this? ओह वाओ. Okay, ये वाला थोड़ा भी गीला है इसलिए वो निकल के आ रहा है. It ओके. looks something like this. हाँ. Okay. हाँ. उसके एक बाद यूनिफॉर्म what I लेयर पूरी सेट हो गई है. या ये मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया इसलिए है ना थोड़ा फट गया, मगर एक यूनिफॉर्म लेयर है ना सेट हो जाती है. फिर आपको हम्म. क्या करना होता है, तो आपको उसको एक क्लॉथ लीजिए एंड यहाँ रखिए. क्लॉथ लीजिए और उसका सोक कर दीजिए. ओके. एक्सेस वाटर. ओके. सम यस, यू हैव टू जस्ट सोक इट. कैन यू सी इट? यस, यस. या एब्सोल्युटली. सो आप आपको बहुत केयरफुली है ना वो एक्सेस जो टॉप में है ना वाटर रहेगा, वो आपको सोक कर लेना है. ठीक है. हम्म. एंड फिर आपने सोक कर लिया, उसको थोड़ा The अच्छे से सोक कर लीजिए. pulp would not stick to the cloth. नो 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 नो, यू हैव टू डू इट प्रॉपरली. दैट्स द रीजन. आपको है ना एक इवन लेयर ऑफ क्लॉथ को एक इवनली है ना उसको स्प्रेड करना है. ओके. देखिए, आप अगर है ना इसे डैब करेंगे ना, ऐसा एक इसको इससे लेके अगर आप डैब करेंगे तो फिर वो स्टिक होगा. बट ओके. इफ यू आर टेकिंग इट लाइक प्रॉपरली, एक एक थिन इवन लेयर लेयर अच्छी. लेके देखिए, एक थिन हाँ. लेयर लेके कर रहे हैं ना आप, तो फिर ना हाँ. स्टिक नहीं होगा. तो ओ. आपने उसको भी ऐसे करके केयरफुली निकाल लेना है. ठीक है. हम्म, ये देखिए इसको. और ये अभी प्रॉपरली हुआ नहीं है, ये जो आप हम्म. करते हैं ना, ये अभी ओ. टेढ़ा ऐसे दिखाने के चक्कर में थोड़ा सा या. खराब हो गया है. बट हम्म. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज. तो आपको इसको प्रॉपरली ड्राई करना है, प्रॉपर डैप करना है, तो एक्सेस वाटर पूरा निकल जाए. उसके बाद आपको एक क्लॉथ रखिए, कोई भी एक क्लॉथ ले लीजिए. उसको अच्छे से है ना सोक कर लीजिए. पहले ये वाला जो है ना, उसको अच्छे हम्म. से पहले एक कॉटन से क्लॉथ से आप है ना इसको डैप कर लीजिए, एक्सेस वाटर निकाल लीजिए. फिर आपको इसको इन्वर्ट करना है. ये वाला ओके. तो प्रॉपर आएगा नहीं, तो प्लीज डोंट जज मी. ओके. ये वाला ठीक है. आपको इसको इन्वर्ट करना है एंड टैप टैप हम्म. टैप इट सो दैट इट विल कम आउट प्रॉपरली. ठीक है. एंड आफ्टर टैपिंग इट आपको ऐसे निकाल लेना है. ठीक है. निकाल लेने के बाद आपको इसको एयर ड्राई होने देना है. तो इन द एंड इट विल लुक लाइक दिस. ड्राई वाह. होने के बाद इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. मैंने ये आपको हल्दी वाला बताया था ना, तो ये हल्दी वाला है. ऐसा अभी प्रॉपरली शायद से येलो दिख नहीं रहा होगा शेड, यस. बट ये है. हाँ. ओके. देखिए मैंने इसे रेड कलर भी यूज किया है, तो ये वाला भी है. लवली. इंटरेस्टिंग. हाँ. तो ऐसे करना है आपको. बेसिकली इसको इट्स वेरी इजी.
सन ड्राई करना है या फैन में ड्राई कर सन सकते ड्राई नहीं, फैन ड्राई कर लेंगे वो भी काफी है। सन ड्राई ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। हैं? इट एंड हाउ मच डिपेंड्स। टाइम डज इट टेक टू ड्राई प्रॉपर्ली? It takes around 2 hours, 2 to 3 hours. It Oh, depends on the thickness of the paper. all As you right. can see, look, one second. This one, this one took 3 to 4 hours because look at the thickness. Yes. But this tiny thing, it took me around 1.5 hour. इतना इतनी देर में हो गया ये वाला। ठीक है, बहुत Uh-huh. पतला है compared to this. So it Yes. depends upon the thickness of the paper. That's Hmm. it. ये पूरा Uh, प्रोसेस ऐसा है। एंड आप कुछ बोल रहे हैं? what do you use हेलो। these papers? What do you use these papers for? बंद तो गया, दिस अब यूज क्या इज करते हो? मैं इस पे है ना, नॉर्मली इस पे मैं थोड़ा पेंटिंग कर लेती हूँ। इसमें हम्म। ज्यादा मगर है ना पानी डाल के मत करना, बिकॉज फिर वो निकल जाएगा, मतलब बेचारा वो ही है ना, पूरा डाइल्यूट हो जाएगा। तो मैं इसको एक्रिलिक पेंट, एक्रिलिक जो पेंट्स होते हैं, मैं इस पे ड्रॉ करती हूँ, पेंट करती हूँ, या फिर आप लिख सकते हैं। इट्स मोर लाइक अ Okay. डेकोरेटिव आइटम विच वी कैन यूज। हम्म। या फिर आप है ना पेन से भी लिख सकते हैं इस पे। आप ऐसा एक डायरी भी बना सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इसका ऐसा स्क्वायर करके भी है ना बनाते हैं। छोटे हाँ। छोटे डायरीज का जो पेज होते हैं ना, ऐसे Yes. बना देते हैं। हाँ, तो वो Okay. बहुत इंटरेस्टिंग दिखता है। तो Yeah. मेरा Punch. ऐसा सर्कुलर छन नहीं है। Yeah. हम्म। पंच कर लो तो उसको एंड बाइंड देम हाँ, टुगेदर। आप हाँ। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आप है ना इसका एक वो जो ये डायरी सॉर्ट ऑफ भी बना सकते हैं, बहुत सारे पेजेस का। ठीक है, लेयर्स ऑफ पेजेस का ना आप यहाँ पर पंच कर लीजिए और फिर पेजेस बन जाएगा। सर्कुलर इज ऑल्सो लुकिंग नाइस। स्क्वायर रेक्टेंगल तो बहुत हाँ यूज किया, सर्कुलर इज बहुत लुकिंग वेरी। देखे हैं। हाँ वो भी है। तो इसलिए फिर है ना, नहीं नॉर्मली लोग है ना ऐसा ऐसा रेक्टेंगुलर सॉर्ट ऑफ भी करते हैं, मगर मेरे को सर्कुलर ही अच्छा लगता है। या। एंड हाउ द प्रिंस। फ्लेक्सिबल इज दिस पेपर? जैसा हमारा एक नॉर्मल पेपर होता है, यू हैव अ नॉर्मल पेपर हियर ना? यस 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 आप एब्सोल्युटली आई हैव इट। इसको और इसको कंपेयर करके कैन यू शो कितना कितना क्या होता है? फ्लेक्सिबल? लाइक यू कैन मूव दिस पेपर ना, ऐसे आप इसको फोल्ड या कर सकते हाँ, हो ये या ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। हाँ, नहीं इसको मगर कैसे इसको है करते ना, हैं? इसको इसको इतना नहीं फोल्ड कर सकते। टूट जाएगा, इसको ओके। या हाँ ज्यादा नहीं, बिकॉज ये फ्रेजाइल होता है ना। इसको हाँ। आपने एक तो रिसाइकिल किया है, ऑल राइट, तो ऑल फिर राइट। ये हाँ ये तो मतलब फ्लेक्सिबल है। लाइक यू कैन आयरन इट, यू कैन मेक इट स्ट्रेट, यू कैन स्ट्रेटन इट, बट अच्छा। इतना नहीं, मतलब टूट जाएगा। ओके, ओके। हाँ गॉट। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ये मेन हमारे वो पल्प से बनता है, ट्री जो या। पल्प होता है उससे बनता है, तो ये प्रॉपर एक तरीके से होता है। बट इसका रिसाइकलिंग हुआ है, तो फिर प्रॉब्ली इसका दैट्स रीजन वो थोड़ा फ्रेजाइल होता है, और ओके, कुछ नहीं। हाँ, ओके। ओके, नाउ आई एम नॉट गोना थ्रू ऑल द ओल्ड बुक्स। सबको लेके नॉट मैं एट ऑल। पेपर हाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ ऐसा मत हाँ, बोलना बट कि इट्स रीवा ने बोला इंटरेस्टिंग, नहीं। मजा आएगा करने में। हाँ बहुत मजा आता है। इट्स लाइक मतलब आप बहुत बार फेल भी हो गए, हाँ डोंट डोंट गेट डिसहार्टेंड बाय इट, क्योंकि हाँ, वो तो प्रॉपर सा मैटर। वो क्षण। हाँ, नहीं हुआ तो देख, व्हाट वी कैन डू, वी कैन रीमेक इट। हाँ देखिए, आपके नहीं होने के लिए तो मेरा यहीं पर नहीं हुआ है अभी अभी। तो आपको हाँ। क्या करना है, बस ये ले लीजिए वापस, आपका पल्प ही है ये ना, तो आप हाँ, पल्प को फिर से ले लीजिए, फिर से इसको पानी में डाल दीजिए। सोक कर दें पानी में फिर से। डाल दिया, फिर से आप, हाँ फिर से आप है ना इसको पोर कर दीजिए, हो गया। ओके। अगर हाँ थोड़ा इसको सा मतलब ड्राई ड्राई। हाँ, ड्राई सॉरी, होने आप के क्या बोल रहे बाद, थे? ड्राई होने के बाद थोड़ा खराब हो जाए हाफ ड्राई पे, तो फिर से उसको कर हाँ सकते हैं सोक करके। हाँ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई भी ओके। इशू नहीं है। ऑल राइट, ऑल राइट। अमेजिंग, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी फन एक्टिविटी हो ये जाएगी। हाँ, ये बच्चों के लिए बहुत, वो पेशेंस लेवल भी बहुत बढ़ता है आपका इससे, मैं बोल रही हूँ। क्योंकि है ना, एक दो बार में अगर अगर आप फेल भी हो गए ना। सॉरी। These things should be taught in school. एब्सोल्युटली। ये आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे एक्चुअली स्कूल में ना बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती थी, प्रॉब्ली दैट्स द रीजन मैं थोड़ी सी आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ ज्यादा हूँ। तो हाँ। मेरे को ऐसा लगता है आर्ट एंड क्राफ्ट है ना, हम लोग थोड़ा लाइटली लेते हैं, चलो यार क्या है इसमें, क्या करना। बट उसको है ना, आप दूसरे एंगल से देखेंगे ना, तो आपको एक ब्यूटी दिखेगी उसमें, आपका हम्म। पेशेंस लेवल बढ़ेगा, आप या। एज अ पर्सन विल ग्रो। आपको यस। एक पता है, एक फूल बनाने में कितना पेशेंस लगता है, यू वोंट आई इवन नो। इमेजिन इट।
I know, I बहुत know. मतलब उसको वो जो बैठ के पूरा आर्ट बनाते हैं, इट्स Mm. हैट्स ऑफ टू देम. आई कांट Yeah. डू दैट काइंड ऑफ पेंटिंग. बट Yes. हाँ, ये करने में भी मेरी बैंड बज जाती है ऑनेस्टली. Yeah. Okay, interesting. This was so easy. I used to think कि paper making क्या होगा, पता नहीं कितना मुश्किल होगा. But this was really simple, really interesting, and so fun. Yeah, this is Okay. definitely I a hope summer you project for were the me. one. uh, you were the reason that I did this paper making thing, because Zara was like मेरे को ये वाला देखना है, तो प्लीज आप Yes. ये इसको अपने सेगमेंट में लेके आइए. तो मतलब Yeah, ओके. and I wanted to watch it live. Like I was not happy with the ये reel that I watched. नहीं मुझे live देखना था कि कैसे होता है. Reel में तो बहुत सारी अच्छा. editing हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी. हाँ You don't know. हाँ हाँ But हाँ I wanted to हाँ, see it मगर live. नहीं 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 नहीं, अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. एंड इट वाज interesting. This is actually the first time when I'm doing a one-on-one video conferencing thing, but it was And fantastic. yeah, so we have 5 more minutes left. Rima, is there anything else that you have to show to us today? So I don't have anything to show, but we can talk if you want. Yeah. Yes, yes, sure. So there was this, I just forgot to say, there was this very interesting thing, yeah, which I was reading today itself, for this session only. Mm-hmm. We as a woman, we as a woman, what do you think, Mazera, one menstrual cycle, how much pads do we use? It आपका और depends. मेरा चलो कॉन्वर्सेशन करते हैं. Yeah, it depends on the individual and their Max, minimum 5 five, to 6. What do you five to think? six. Yeah, five Minimum, to six. Yeah. minimum 5 to 6, right? And if I say कि वो एक पैड को डिग्रेड होने में टाइम कितना लगता है, व्हाट डू यू थिंक, लाइक आप बताइए कितना लगता I don't know. I really don't know about this. Maybe a couple of months or maybe a है. year नो or two. नो Oh नो, my God. एक्चुअली इट डजंट. It It doesn't takes decompose? no, it doesn't degrade. It doesn't degrade, not at all. It's made up of plastic. हमको realize नहीं होता, but Oh. even the male people who are there over here, I think it is necessary for even you to get educated about this, because it takes 200 to 300 years to actually degrade it. One So sanitary you can. napkin. Absolutely. Oh my And God. you can imagine, you can imagine the level of sanitary napkin which we use, and Yes. we have the kind of waste we have generated. So there Oh was my. this major switch while in this journey when I was actually going through. I Mhm. thought like, चलो यार, किसी के लिए कुछ करे ना करे, एटलीस्ट इतना तो करना ही चाहिए हमको. आई बीइंग अ वुमन, हम लोग वुमेन फेमिनिज्म की बात करते हैं, तो आई थिंक वी नीड टू वी नीड टू लाइक चेंज इट. तो मैंने एक स्विच लिया. तो आई स्विच फ्रॉम सैनिटरी नैपकिन टू menstrual cup, Okay. which I think everyone is like, now everyone is kind of getting aware about it. It is Yes. fantastic. It depends on upon the companies which they're making, but the ones which I'm using, they're like great. I think everyone, like every woman, should give it a try. It's kind Hmm. of scary, I know, I understand for a few of them, because it was scary for me as well. So you should give it a try and you should make a switch. Absolutely would recommend it, because the kind of waste which we generate as a woman, because we are the homemakers. Hmm. In literal sense, we are the homemakers, so we should like be careful Yes. in Every such aspect. kind of things. Hmm. Absolutely, absolutely. So that was something which I wanted to say, because people don't talk about it, but I'm okay with it. Yeah, no, absolutely. That was a Yeah. very scary realization, like 100 to 200 years, my Mm, God. And we generate so that much was waste each and scary. every month, Yeah, every month. absolutely, absolutely, absolutely. So I thought, let's just spread this word. Let's spread the Yeah, awareness. thanks for It will be the helpful for, yeah, it will be helpful. reminder. Yeah. Absolutely, And absolutely. let's go on to our fertilizers, liquid fertilizers.
Absolutely, but yeah, we can talk about it right now. Okay. Okay, great. Yeah. So the kind of fertilizers which I use, I don't have it like right now. I kind of forgot. So Okay, no the worries. fertilizers which, yeah, I'm sorry, Vera. No problem. I yeah yeah. It's time. Uh, so the kind of fertilizers which I use, they are homemade. I don't use the one which are there in the market because All I think right. why to waste money if you already have resources at your home, why not use them properly and Mhm. benefit your plants and save some Uh-huh. money. Yes. So some which I use are first the eggshell. Okay. Eggshell, you won't believe it. We use it. How we can do it is we can dry it. We can just first, after breaking it, we can clean this thing inside and dry it. Hmm. Dry it in the sun. Okay, Okay. dry it, and then in the mixer we can like क्या बोलते हैं पीसते हैं. Hmm. You can grind it, yeah. So Yeah. you'll get a fine powder. You'll get a fine Yes. powder of it, and then you can sprinkle it like a teaspoon or something. You can sprinkle on the plant, Uh, depending upon the plant as well. okay. Suppose if the plant is like this big, suppose it's this Hmm. big, then one or two teaspoon is perfect. But if the plant is something like this big, then probably half teaspoon. Okay. So You are yeah, beautiful. depending upon the thank you. This is also one more DIY which I did. I can This is see. these are the CDs which I used, and this was a Oh, legging. oh, oh. Yeah. So Lovely. yeah, this has a whole new story. And the Hmm. most common thing, most common fertilizer which I think everyone knows about is banana fertilizer, which can Yeah. be used in the dry as well as in the liquid form. Liquid form. Yeah. Dry as in like you can dry the as soon as you eat the banana, you can dry the peel in the sun and then grind it, and then Hmm. you can use the powder and sprinkle it just the way I did for the eggshell. Okay. You can sprinkle it, or you can directly use the banana peel and keep it in a like a glass jar. Hmm. This glass jar, one glass jar is perfect for it. If you Hmm. you can cut it if you want. You can cut it. Some people are like they don't want to cut it. They can just drop that thing inside that jar, and they can directly keep it for at least 24 hours a day or so, Hmm. and then use the liquid to water the plants. Instead of Oh, watering like normal water, they can use this water. It's more direct. like a fertilizer. Yeah, Oh, and that is helpful for a flowering plants. okay. Do you dilute that water? No, no. If I keep it for 24 hours, I don't dilute it. If I keep it for much longer, like 3 or 4 days, then I do dilute it because the more you keep it for a longer duration, it Hmm. gets concentrated. So at that time, you can dilute it. All right. Yeah. And And one more, you can use the tea, like the leftover tea. hmm. हम इंडियंस हैं, चाय तो बहुत पीते हैं. Hmm. तो उसको उसको हम यूज कर सकते हैं. हम उसको है ना, देखिए डायरेक्टली मत यूज करना बिकॉज उसमें है ना दूध दूध के पार्टिकल्स रहते हैं या चीनी के पार्टिकल्स रहते हैं, तो प्लीज उसको डायरेक्टली मत यूज करना क्योंकि फिर वो है ना प्लांट में एंट्स वैंट्स आ जाएंगे. Huh. एंड्स आ जाएंगे तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है. अपने Yeah. प्लांट्स को क्यों हार्म करो. तो इंस्टेड ऑफ दैट व्हाई डोंट यू क्लीन इट. जिस उस पे है ना 2-3 बार है ना वाटर वाटर है ना ये कीजिए अच्छे से, उसे क्लीन कीजिए वाटर से एंड देन Hmm. यूज इट. यू कैन डायरेक्टली पुट इट इन रोज प्लांट, इट वर्क्स वंडर्स. अब बहुत Oh, गुलाब आएंगे आपके रोज के प्लांट में. okay. दीज आर सम ऑफ देम. मैं बीटरूट फर्टिलाइजर भी यूज करती हूँ. उसमें आपको Okay. पील पील यूज करके भी आप कर सकते हैं. तो Mm-hmm. सिमिलर सिमिलर मैनर रहता है. आपको पील यूज करना है एक ग्लास में पानी में, आप उसको पील को डालिए 24 आवर्स के लिए रखिए एंड देन यूज द वाटर और वाटरिंग द प्लांट्स. और वो Okay. जो पील रहता है वो आप कॉम्पोस्ट में डाल दीजिए. Compost में तो कहीं भी हाँ कॉम्पोस्ट में डाल दीजिए. आपको उसको कहीं और डालने की जरूरत नहीं है, फेंकने की जरूरत नहीं है. zero waste. Yeah. जीरो वेस्ट, परफेक्ट. Yeah. Okay. Anything else?
बोलने को तो बहुत है. Okay, धीरे but we धीरे have करके. run out of time. Okay. It was so lovely talking to you, Rima. You too, Zara. It was lovely talking to you too. It was a very interesting session. Whatever you've shown was amazing. I'm sure everybody watching would love your, you know, the activities that you've shown today. The little compost box Absolutely. Hope and so. handmade paper and the bioenzyme. Definitely, I'm gonna, look out for it on your page on how to Absolutely, absolutely. do And I'll that. make a video also. Yes, yes, definitely gonna I'll make a try. proper video. Yeah, yeah, absolutely. Do try it. And I'll give a like a proper video on it. I'll make a proper video on it and I'll upload it on in my Instagram handle. You Yeah, can sure. check it out over there. Yeah, everybody can check it out and do try it out at home. And you can message Absolutely. Seema directly about your Anytime. results, Abs- and you can ask her for any questions. Her The link to her Instagram page is in the description box below. I'm reminding you once again, go check it out. And yeah, that was an interesting session. Thank you so much for being here with us today, Thank Reem, you. and sharing such Thank you. valuable information with Thank you. us. And Th- thanks for the lovely reminders. Thank you. Thank you so much. It was absolutely fun. I think this is my first session, but it went comparatively better. Yeah, it was And wonderful. thank you, Zara, for being such a great host My pleasure. and supporting me wherever I was lacking. No, no, It you was were great great. talking to you. Same Thank here. you. Thank you. Thank you, everyone. Let's be connected. Yeah, Sure, sure, sure. Instagram, I'll message you there. yeah. Absolutely. Thank Okay, see you, you there. everyone. Have a Bye great bye. day. You Bye too. bye. Bye.